Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. Today we're going to learn about Social Studies Book 3 new edition. Let's start. Our topic is difference in past and present. Chapter number 1, unit number 6 and page number 59. Things change. As time passes, everything changes. Nothing remains the same. We should try to make changes that are for the better. Things should improve. The changes should not make things worse than before. जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सब कुछ बदल रहा है. कुछ भी एक जैसा नहीं है. हमें चाहिए कि हम हमेशा पॉजिटिव चेंजिंग्स की तरफ आएँ. चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए और जो चेंजेस की जाए वो वर्ड्स को बेटर बनाने के लिए की जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, गुड चेंज एंड बैड चेंज. एज यू सी हेयर, वी यूज टू राइट विथ चॉक एंड स्लेट बिफोर. पहले हम जो लिखते थे वो तख्ती पे लिखा करते थे बाय यूजिंग द चॉक. नाउ वी आर शिफ्टेड टूवर्ड द कंप्यूटर. नाउ वी टाइप on computer. And the bad change is before no pollution and after a lot of pollution. Pollution caused because of aesthetic activity increases. For example, industrial revolution, increase in industries cause pollution. How things have changed. Living and non-living things both change. New ideas and inventions are the part of this process. Things are very different now than they were in your grandparents' or parents' times. Look at the pictures of classrooms. One is a typical classroom from the past. The other classroom is one which is familiar to you. Can you spot the difference? इसमें ये बताया गया है कि past में living और non-living things changed थी और nowadays it changed further. नए आइडियाज़ और इन्वेंशंस बनाए गए इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द थिंग्स इनटू द न्यू थिंग्स. चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो गई हैं अब rather than जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स के टाइम में थी. एज यू सी इन दिस पिक्चर, इन द पास्ट द क्लासरूम लुक्स लाइक दिस. Classroom of the past look like this. You spot the difference. The classroom of the present, as you use your classroom, look like exactly the classroom of the present. Now we are talking about transport. Means of transportation have changed as methods of traveling, modes of transportation in the past were slow, uncomfortable and dangerous. We now travel on machines which are faster, more comfortable and safer. This change has made our lives easier. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चीज़ जो यूज़ होती है, इट इज़ कॉल्ड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. उसका मेथड या ट्रैवलिंग मेथड जो है वो चेंज हो गया. पहले वो बहुत ज़्यादा स्लो और अनकम्फर्टेबल था और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था और अब हम मशीन्स के थ्रू ट्रैवल्स करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, कम्फर्टेबल है और सेफ़र है एज इट इज़ बिफोर. नाउ यू कैन सी हेयर इन पास्ट एंड ओल्ड ऑटोमोबाइल्स यूज़. Now it convert into a modern car that is called machine. A steam engine that is convert into a bullet train. A glider or glider change into an aeroplane. A tonga change into a rickshaw. Now for your interesting information, do you know the first cars did not have steering wheels? स्टेयरिंग व्हील्स पहले ज़माने की कार्स में स्टेयरिंग व्हील्स नहीं हुआ करते थे. ड्राइवर स्टेयर्ड. स्टेयर्ड मीन्स व्हील कह सकते हो या मशीन कह सकते हो. ड्राइवर स्टेयर्ड विद अ लीवर. लीवर इज़ अ काइंड ऑफ मशीन. इट इज़ जस्ट अ मशीन विदाउट अ स्टेयरिंग. चैप्टर नंबर 2, हाउ थिंग्स चेंज, पेज नंबर 62. How living things change. Changes came in stages. Changes do not happen suddenly. Everything living and non-living thing passes through separate stages to become different. You would be surprised if you could see the stages your grandparents passed through to become as they are now.
Look at the pictures below. They are similar to how your grandfather must have looked like in the past. इसमें इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ में तब्दील होती है, चेंज होती है. Now indicate the stage of growing. First you are as a baby, then you change into a toddler. Toddler mean infant. Then into a young boy and a young man and an old man. You are not suddenly changed from baby to an old man. There are various stages through which you are becoming an old man. How old are you now? Do you remember yourself a year back or as a baby? If you look at pictures of yourself, you will see that you have become different now from the past. The difference could be in your height, weight, hair or clothes. अभी आप कितने साल के हो कि आपको याद है कि आप पहले किस तरह से दिखाई देते थे, या आप जब बेबी थे तो किस तरीके से आपकी फेस कट था. इफ़ यू लुक एट योर पिक्चर्स, अगर अब आप अपनी तस्वीरें देखते हो तो आपको वाजिया फ़र्क दिखाई देता है आपकी हाइट में, वेट में, आपके बालों में और आपके क्लॉथिंग में. Did you know the person who lived the longest was from France? Gianni Calment lived for 122 years and 161 plus days. जो इंसान सबसे लंबा, जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी ज़िंदगी थी, उसका नेम है जेनी कैलमेंट, और वो 122 ईयर्स तक ज़िंदा रहे थे एंड 161 प्लस डेज तक. एजेस. All living things change. Have you ever wondered how the delicious apples that you eat grow? Farmers grow them. The apple tree passes through many stages before it comes to your plate. As you see before, we discussing about the human changing stages. Now we are moving toward the apple changing stages. First we saw a seed into a soil, a seed in the ground changing into a sapling, then into a young tree, then a mature tree with apple blossoms, and the apple blossom bloom and becoming a tree bearing apples. ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप एक सीड जो है वो सॉ करो ग्राउंड में और वो डायरेक्टली चेंज हो जाए फ्रूटफुल एप्पल ट्री में. दिस इज कॉल्ड लिविंग थिंग चेंजेस इन स्टेज. Moving toward the exercise, unit number 6, past and present. Answer the following questions. Define the meaning of transport. Transport means traveling from one place to another. ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आप व्हीकल को यूज़ करते हो, इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. Is modern modes of transport changes our life? Yes, definitely. How things have changed. Living and non-living things both changed. New ideas and inventions are a part of this process. Living and non-living thing दोनों चीज़ें बदल चुकी हैं नए ideas और inventions की वजह से. Look at the picture below and describe how transport has changed with time. In the past, transport was slow and not it is faster and safer. Past में ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा स्लो थी क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग मशीन्स, एंड नॉट इट इज़ फास्टर एंड सेफर. इट इज़ नॉट फास्टर एंड सेफर एंड नाउ इट इज़ मोर फास्टर, कन्वीनियंट एंड सेफर. Choose the correct option. In past we used to write with chalk and slate, pen and notebook. Definitely chalk and slate. In modern age we type on typewriter or computer. In past we used dash for transport, a tonga or a car, we use a tanga. In modern age we used for transport rickshaw or tonga, we use rickshaw. Living and non-living things both cannot change. Yeah, it rapidly change. Fill in the blanks. As time pass, everything change. We should make changes that are for the dash, for the better. Living and dash both change. Living and non-living thing both change.
New ideas and dash are the part of change. New ideas and inventions are a part of change. The things should not make things dash than before. The things should not make things worse than before. Unit number 6 is completed now. That is all from this topic. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।